I said I can't do that. So now please remind me recording for them. Okay. Now how we work with this? Everybody, I'm telling you some files where you have to do some changes. So please open your driver and go to the file, the header file in which you have declared your struct dev. What is the name of that file? Declarations.h, if I'm right. Inside declaration.h, you have struct dev declared. Inside this, you have declared many things. You declare struct semaphore sem. Declare semaphore variable. Bring in this declaration. सर ये डाटा स्ट्रक्चर में Declare इसमें ना? I think you have it inside your declarations. Data structure dot. Okay, data structures dot. Isn't it? So what it just did was declare semaphore. Only one semaphore. Next, inside your init.c. हेडर में भी तो इंक्लूड करेंगे ना? हाँ, हेडर में भी तो इंक्लूड करेंगे. हाँ, हेडर में भी इंक्लूड करेंगे. Inside headers .h, you include Linux semaphore.h. Then in data structures, you just declare semaphore. Inside struct dev, that is device representation, user defined data structure. Okay. Then in init.c, you have to initialize. Initialize semaphore. Init.c. In init.c, you have done after cdev init. You have done cdev init. Yes, sir. Before cdev add, in between these two, you already in the loop for NOD iterations, है ना? आप already loop में है. Inside loop, you are doing cdev init and cdev add. Here you will do
sema_init. First argument is semaphore, pointer to semaphore. So where is your semaphore? Your semaphore is inside dev, struct dev, points to sem. You have declared semaphore variable. So use address. And you have to initialize it with value 1. The semaphore is initialized. You have number of devices. sir. Already pointer available. So you have this pointer is for this sem. So this address is for sem. So you will create one semaphore per device. Okay. एम्परसेंट लगाने की जरूरत नहीं होगी ना सर. डेव आई एरो सेम पॉइंटर टू सेम. नहीं एम्परसेंट की जरूरत तो पड़ेगी मेरे को लगता है. तो ऑलरेडी हम पास ही कर रहे हैं ना एड्रेस. Sem is a variable, so we have to have sem is a variable, so we have to have address of variables. फिर काउंटिंग सेमाफोर अगर लगाना होता तो यहाँ पे क्या कैसे करते? तो वैल्यू 1 से ऊपर 2 या 3 या 4 होती, डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी ये है, क्या बोलते हैं इसको, रिसोर्स. रिडंडेंसी एट द शेयर्ड रिसोर्स. ये इनिशियलाइज करने का तरीका है. ये शुभम सर काउंटिंग सेमाफोर में जैसे वेट की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है, वेट से मतलब वेट सिग्नल की उससे, तो सर वो मतलब 1 से 0 होती है नॉर्मल बाइनरी सेमाफोर्स में. तो काउंटिंग सेमाफोर्स में किस तरीके से मैनेज होगा वो सारा? मान लो 5 है. यस सर. 5 से डिक्रीमेंट होगी 4, फिर Yes. और प्रोसेस क्रिटिकल रीजन में चला जाएगा. दूसरा प्रोसेस आएगा, that will see, oh, it is 4, decrement it to 3 and go in the critical region. Another process will come, it will see, okay, 3, it will decrement it 2 and go into critical region. Another process comes, says it is 2, okay, decrement it to 1, go into critical region. Another process will see, oh, it is 1, decrement to 0 and go into the critical region. Now the process will come that will see, oh, 0, wait in the waiting list. ओके मतलब सर कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे डिपेंड करेगा वो कि नहीं, नंबर ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा. हाँ, और हाँ. इससे क्या होता है कि कितने प्रोसेस, हाउ मेनी प्रोसेसेस कैन गेट इनटू क्रिटिकल रीजन will be controlled by how many processes will get into the critical region at a given time. That will be डेडलॉक लगने के चांसेस भी तो हैं. हाँ, वो सब चीजें हैं, वो अलग चीजें बाद में डिस्कस करेंगे. अभी क्यों कंफ्यूज करूँ आप लोग. ओके सर. डेडलॉक बाद में देखेंगे, रेस कंडीशंस. So you create your semaphore like this. In a loop, your semaphore will be created, one semaphore per device. Then how to use semaphore? Using semaphores. We need to identify first shared resource or resources. Okay. Second, apply semaphores before the code. Critical region or regions. पहले तो shared resource को find out करो. If you found the shared resources,
then you have to find the critical region of code that is using that shared resource. Then apply semaphores before the critical regions. It is as simple as that. तो पहले सवाल का जवाब दो, आपकी शेयर्ड रिसोर्स क्या है? सर मेमोरी में जो राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं? आई मीन शेयर्ड रिसोर्स तो कोई हार्डवेयर होगा या कोई डिवाइस होगी या कोई बफर होगा या फिर डेटा होगा. इट्स अ रिसोर्स. स्कल यहाँ पे कॉमन है ना सर सबके लिए रीड राइट करने. स्कल कॉमन, वेरी राइट, आई एग्री विद यू. शेयर्ड रिसोर्स is your skull. Critical region. All the code that accesses skull is the critical region of code. You know? So these two things. So where did you access skull? In our application also, in device driver also, In application write operation to write the data. Where you create the skull and write data. You know? Yes sir. So you are going to device write. है ना? अब इसमें here also you have to do, we need to identify shared resource which is skull. Critical region. We know shared resource is skull. Okay, fine. Now where is the critical region of code? That code that is accessing skull inside your write. Where is it? Look at your write code and tell me. Yes, Nirendra? In applications, in a write, three process going on for the write call. So every skull is the different or same? Hold on, just a minute. Just a minute. Sorry, Niranjan. Could you tell me once again? In write call, so we are using the skull create for every write. So three process for do same write call. So every three write call has a different, create the different skull or same resources for same skull? Well, if you are writing, good question. Listen, and very deep understanding you have to have for this. First task, three applications are writing. Okay, you have NOD number of devices. Now my question is, to get your answer, you must identify all the three applications are writing in same NOD number of devices, same one out of the NOD number of devices or different devices. How will you know that? In the VFS layer, you have created MK node. In the MK node, you have given major minor number. If for all the three applications, you are using the same file name, which you created using MK node, that means you're using the same major minor number. That means you are running the three instances of same write operation for same device. Yes, sir. So three instances of dev writer, device writer running now. Purendu says copy from user is the Critical region. macro where is the critical region. But before that, you have created skull. Yes sir. Whole create skull function is a critical region. What if two processes start creating skull at the same time? But now question कि एक process skull create कर दिया,
हाँ। और फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस उसमें है, तो वो तो फिर एक जहाँ से मतलब 10 क्वांटम क्रिएट किया है, उसके बाद वो क्रिएट करेगा या फिर शुरू से ही क्रिएट करेगा? अगर अपेंड मोड में ओपन कर रहा है दूसरा वाला, इफ द सेकंड एप्लीकेशन इज ओपनिंग इन द अपेंड मोड, देन इट विल क्रिएट आफ्टर द 10th quantum. If the second application is also opening in the write mode, then it will try to overwrite. It can't overwrite straight away. So how will you overwrite? First trim and then overwrite. तो डेटा जो फर्स्ट का तो डेटा लॉस हो गया फिर। Data loss, so that also synchronization we need. Don't trim it until unless the read is done. ओके, So we need to do that also. so one write is done, read is completed, then write process is going That on. we'll do later. That's a handshake. Okay. Now, function. अभी critical region क्या है? ओह, ये कहाँ भाग गया? Function that creates skull are critical region of code. Then macro that writes into skull are also critical region of code. Some updates after writing like number of characters written successfully वगैरह ये सारा है ना, तो ये यहाँ पे सेमाफोर अप्लाई होगा. सेमाफोर अप्लाई करने के लिए वेट ऑपरेशन कैसे होता है? ये सेमाफोर ऑपरेशन that are applied on the semaphore variable. Two type of operation, wait operation and signal operation. Semaphore wait operation करने का तरीका. Semaphores wait operation. How it will be implemented? It will be implemented using down, because the semaphore is being decremented here. So the corresponding call is called down. Down. मतलब semaphore wait operation. इस ऑपरेशन में क्या होता है? If the process or the corresponding operation ever goes into sleep, implies non interruptible, non preemptible atomic mode. ठीक है, मतलब कि when you use down, then the interrupts are disabled, preemption is disabled, and everything works in an atomic mode. मतलब if a process, let me give the statement here, means if the process initiates test. Test means check if the
semaphore variable is greater than 0 or not. You check. Then no other process will initiate their test if a semaphore is checking that the semaphore variable is greater than 0, because only if it is greater than 0, then it will do semaphore decrement. If a process is checking that the semaphore variable is 0 or greater than 0, at that time, no other process will start test until the already testing process have finished semaphore variable increment or decrement. Now, if the first process was doing test, semaphore variable is greater than 0 or not, no other process will start test until this process finish test. No. No other process will start test until the first process finishes increment and decrement after its test. Okay. Yes, Pulendu? सर ये सेमाफोर को टेस्ट करने से पहले या चेक करने से पहले कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं, क्या है कहीं लॉक, पहले हमें लॉक लगाना होगा उसके बाद चेक करते हैं या लॉक? लॉक लगा के चेक करते हैं, वो स्पिन लॉक का काम है, वो हम बाद में देखेंगे। स्पिन लॉक का सॉरी, ओके सर। एक और क्वेश्चन था कि ये जो आपने कहा कि ये सेमाफोर वेरिएबल आफ्टर चेकिंग until it performs its test then it is will increment और decrement। decrement समझ में आया, मान लीजिए वैल्यू 5 थी हमारी तो इसको 4 बना देगा। इंक्रीमेंट कब करेगा ये नहीं दिख रहा मुझे। सिग्नल करते वक्त अच्छा, क्रिटिकल रीजन के बाद। ठीक है। So the process is testing. No other process will start testing until the first process after testing do decrement or increment, whatever. ठीक है। So this is atomicity. So this is the down. But there is another type of down. Down interruptible. इसका मतलब क्या है? Same as this. Down underscore interruptible. Semaphore wait operation if the process operation implies it is non-interruptible. Interruptible, non-preemptible atomic mode. Rest is same. इंटरप्टेबल होगा। कब इंटरप्टेबल होगा? इंटरप्टेबल only during sleep in semaphore wait queue. Some process suppose did not get the semaphore, it will go into the semaphore wait queue. During its stay in the wait queue, it could be interrupted. Okay, that is down interruptible. Yes, Purendu? सर समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार और बताइएगा। If the process tries to get into the semaphore critical region using semaphore, but it is not able to get into the critical region because the semaphore variable is 0. So where will the process go? It will go into the semaphore waiting queue. In the first case, the process in the semaphore waiting queue was non-interruptible. But here,
the process, if it is in the semaphore waiting queue, it will be interrupted. Yes, Niranjan? सर यहाँ पे जो हमने ड्राइवर रूटीन लिखा है, अगर हम डाउन इंटरप्टेबल अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो हमारे केस में कैसे पॉसिबल होगा कि इंटरप्टेबल हम इंटरप्ट जनरेट करें और फिर दें? नहीं, मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर हम जो हमने रूटीन लिखा है, हमने यहाँ पे डाउन इंटरप्टेबल अगर यूज किया है तो कोई भी अगर सिग्नल इंटरप्ट का सिग्नल आएगा तो वहां से लॉक हो जाएगा स्लीप मोड में। तो हमारे केस में कैसे जनरेट होगा इंटरप्ट अगर टेस्ट करने के लिए? इंटरप्ट कैसे आता है वो हम बाद में देखेंगे इंटरप्ट्स में, वो अभी का टॉपिक नहीं है। हाउ इंटरप्ट्स आर जनरेटेड, दिस वी विल सी लेटर, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग इफ द इंटरप्ट ever comes, it will be allowed or not. The interrupt mechanism is a separate study that we will see. Yes, Shubham? सर इंटरप्ट्स बेसिकली सिग्नल इंटरप्ट की बात हो रही है ना? नहीं नहीं नहीं, सिग्नल तो वो चीज है जो आपने पढ़े हैं, सिग्नल्स that are Yes, registered using SIG है ना? Yes, sir. Interrupts are separate events that are generated upon some activity happening at hardware, or maybe some operating system sending some interrupt to some drivers. So interrupt is a separate mechanism we have not discussed at all. Okay. Signals are some things that are sent by the kernel modules to the user space applications. Yes, sir. Interrupts are something that could be sent through user space application or to the device driver or to the kernel threads. Okay. So both are event based. Okay. Signals could be executing in scheduled mode, whereas the interrupt execute in single mode, non-interruptible, non-schedulable. We'll discuss about interrupts later. Then there is key level. It is all the same with some differences here. Is non-interruptible, but preemptible. During sleep or wait in semaphore wait queue. ठीक है? Minor changes are important here. Then you have try-lock. Yes, Niranjan? प्रिमिटल जो यूज करेंगे वहाँ पे वो सब कैसे करेंगे? मतलब यस, नहीं समझा, फिर से बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि सर यहाँ पर जो यूज हो रहा है कि डाउन की लेवल, तो यहाँ पे प्रिमिटल प्री इम्पिटेबल मोड जो है वो कैसे जनरेट होगा और कैसे हम यूज करेंगे? अब वो इसके अंदर इसका लॉजिक सी में इंप्लीमेंट किया हुआ है, हम कर्नल खुद में नहीं घुस रहे अभी। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि प्रीम्प्टेबल करना है तो ये वाला यूज कर लो, ओके इंटरप्टेबल करना है तो ये वाला यूज कर लो, प्रीम्प्टेबल इंटरप्टर पे कुछ भी नहीं होना चाहिए तो ये वाला यूज कर लो। ओके अब ये कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है वो हम पहले इंटरप्ट सीख लेंगे, फिर हम इसको समझ पाएंगे। हालांकि इसके कोड में घुसने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू गेट इनटू दैट। नाउ ट्राई लॉक। Let me create this. Okay, level. Now trying try lock, down try lock. Non interruptible, non preemptible atomic mode of execution होता है। पर इसमें एक चीज और भी होती है, ड्यूरिंग स्लीप इन वेट क्यू नो,
not this. Also not this. The process never goes to wait queue. If the process is not able to get the semaphore, not able to enter into the critical region, maybe because the semaphore variable is 0, it will not go to the wait queue. Instead, it will iterate and keep trying to get into the critical region. वो ट्राई करता रहेगा, वेट क्यों नहीं जाएगा. ठीक है ना. Then you have another down timeout. Now, timeout. Obviously, कुछ समझ में आ रहा है. Not this. ये. Down underscore timeout. Okay. Semaphore wait operation. If the process operation implies non-interruptible, non-preemptible atomic mode of execution. है ना? The process would stay in the wait queue for a timeout period only. जब टाइम आउट पीरियड बाहर हो गया, खत्म हो गया, तो अपने आप वो सेमाफोर वेटिंग लिस्ट से बाहर आ जाएगा और देगा सेमाफोर तो भी नहीं मिला, तो एरर बोल के दिया. यस पुनेंदु, ये टाइम आउट की वैल्यू नहीं मैं पूछ रहा था सर कि ये टाइम आउट की वैल्यू क्या हम लोग मॉडल पैरम में कॉन्फ़िगर करेंगे या कहीं और इसको हैंडल करेंगे? the timeout value will be given as second argument. वो देखो longevity. हाँ सर, उसका नाम देख के नहीं पता चल रहा था. ठीक है. Unit of time delay is GFIS. क्योंकि सेकंड मिलीसेकंड नैनोसेकंड नहीं है, GFIS. GFIS में बताऊंगा क्या होता है. ठीक है ना. सो एक और है इम्पोर्टेंट, यार दिख क्यों नहीं रहा मेरे को. एक और है, कहाँ चला गया, ऐसा कैसे हो गया. ये डाउन टाइम आउट है ना, एक डाउन इंटरप्टेबल टाइम आउट भी होता है. यस पुनेंदु. ये सर अंडरस्टैंड इसका मस्ट का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? पहले नहीं देखा था मैंने. हाँ, इसका मतलब कि ये रिटर्न टाइप जरूर चेक करना है. नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू फॉर फेलियर. सो अप इज सिग्नल, whether आपने डाउन किया, टाइम आउट किया, ट्रेल अप किया, व्हाटएवर किया, अप मींस सिग्नल मींस कम आउट ऑफ द क्रिटिकल signal operation, right? So this is how we'll implement semaphore in the write system call. In the read system call also, it is optional. We should put in the read also.
at the time of using accessing critical region. Okay, so try to implement it. If you're able to implement it, fine. To test, you have to run multiple applications, but you will not be able to see anything happening. If there is no error after all the implementation, means all is well. Yes, Punendu? सर रीड में तो कोई ऐसा मल्टीपल एक्सेस से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी रीड कर सकता है, तो फिर उसमें सेमाफोर सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्यों चाहिए? See, synchronize semaphore is like, used for shared resource कहना गलत है. Semaphore is used for shareable resource, not shared. Shared resource means always being shared, like elevator. Huh? Shareable resource, that could be shared but is not being shared, like chair. You sit alone over there. Do you make sit somebody on the lap? Shareable. You can, maybe you make your child sit on your lap when you sit on the chair. So both of you are sharing the chair. That is shareable resource, but not always shared. But something like elevator is always shared. No. Semaphore should be used only for shareable resources, which may be 1 in a million times could be shared. Read is one of them. But semaphores are not advised to be applied on shared resources, which are always shared. Okay, I'll tell you in the coming synchronization mechanism. That's the reason we have so many types of synchronization mechanism. So we'll see that where semaphore should be applied and where something else should be applied. That brings me to one more thing. File locks. I told you that day also I'm missing something. Abhi aa gaya dimag mein. So file log, sequential log, two things are there. So chalo, that's all I got for today. I'll see you tomorrow. Hope you'll be able to implement semaphore. If not, we'll get it implemented. Right? all सेमाफोर को इम्प्लीमेंट करना है कि वन बाय वन करके कैसे मतलब सारे जो इतने कौन सारे से और टाइप कौन से? सारा रूटीन की बात कर रहे हैं, रूटीन की बात कर रहा हूँ. एक ही सेमाफोर के अंदर से जैसे डाउन है, ये डिफरेंट आपने बताया ना, ट्राई है. हाँ, you try down interruptible. Prefer this. Okay. Yes, Purinder? नहीं सर, पूछना था कि आपके साइड से अपना ओएस बिल्ड हुआ है क्या आपके लैपटॉप पे? आप ये कर्नल, सॉरी. हाँ, कर लिया मैंने बिल्ड. अभी मैं ड्राइवर बनाना शुरू करूंगा अगले वाले बैच में, आपके बाद वाले बैच में. उसमें मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीजें थियोरेटिकली मैंने बतानी थी. ओहो, आपको ही बताना शुरू किया था, बीच में रुक गए थे हम. अबाउट सिंक्रोनाइजेशन एक प्रेजेंटेशन थी, सो आई रिमेंबर वी डिड इट हाफ, सो दैट आल्सो विल कंप्लीट टुमारो. तो उनका वो भी थ्योरी चल रहा है कि थ्योरी मैंने इसीलिए पहले शुरू कर दिया ना कि द वे आई वाज ट्रेनिंग डिवाइस ड्राइवर टिल योर बैच and the way I'm training from next batch onwards is a little different because of things that have changed. So a lot of theory has come into them. So अभी भी theory चल रही है, project 4 चल रहा है साथ में. ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी जिनका project 3 चल रहा है, कुछ लोग ऐसे भी जिनका C चल रहा है. But theory could be done. Implementation के वक्त दिक्कत होगी, तो जिनकी C और system programming चल रही है उनको मैं रोकूंगा. Right? तो चलो, that's all I got for today. I'll try to implement it. पाइथन के प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हो? पाइथन के प्रोजेक्ट की बात करता हूँ. वही देखो, आज मैंने जो आया ना वापस, तो मैंने आकर के देखा कि पाइथन का यहाँ से वो वीकेंड पे ही करेंगे, पर वीकेंड में प्रोजेक्ट 2, 1, 3 ऑलरेडी चल रहा है. इनमें से कोई एक चीज खत्म होते ही मैं पाइथन स्टार्ट कर दूंगा, पाइथन का प्रोजेक्ट. अभी 4 प्रोजेक्ट नहीं चल सकते, लेके 3 भी बहुत मुश्किल है. जी सर, बहुत हो जाता है. हाँ, बहुत हो जाता है. 3 को एक्चुअली, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, इट शुड बी ओनली 2 प्रोजेक्ट्स गोइंग एट अ टाइम. All of you are not going to do that project. Only those you not finished these projects should come at appropriate moments. But there are people who are doing it from scratch, so I'm doing it from scratch. ठीक है? You just keep note कि इसमें क्या चल रहा है, और आप where are you stuck in your project, and what is happening here. So you come chip in at right moment. Don't miss it. Right? Madhusudan, for you also, you got into job. That's fine. Your first job was to get a good job. A job, you have it. Your next job is to find a better job. Okay?
I should not say anything wrong, but I want you you deserve to be in a much better place. Okay, so it's a good place, better than you've ever worked, no doubt. It's a better place, but you deserve more. So don't get complacent with respect to feeling. Okay. Okay, sir. Chalo, that's all I got for today. I'll see you tomorrow. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir.